Hello and welcome to Sriman Narayana Physics. My dear students, today in this video lecture I am going to discuss to you people about the spherical capacitor. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम का मकसद तुम्हें स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में आइडिया देना और उस कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उतना ही नहीं, एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, इस चीज को आज तुम लोग इस वीडियो के माध्यम से लर्न करोगे। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज स्फेरिकल कैपेसिटर? अ स्फेरिकल कैपेसिटर, it is just like other type of capacitor, but its construction is different. As previously I have discussed to you people about the parallel plate capacitor, where you have seen that it is consisted of two similar and identical metallic plates which are isolated through a certain distance apart. In this situation, a spherical capacitor, this spherical capacitor is consisted of two concentric spherical cells. You can see from the figure, it is clear that you can see this is a sphere. It is, in fact, it is a spherical cell, and we draw another spherical cell. It is like this. These are two concentric spherical cells, means both the cells have got the common center O. Let the radius of this inner cell, it is A, and the radius of outer cell, let it is B. Now see here, charge is given to the inner cell. Suppose plus q coulomb of charge is given to this inner cell or hollow sphere. See here, the charge supplied, it is plus q coulomb. यानी यह जो इनर सेल है, इस इनर सेल पर हमने प्लस q कूलम की चार्ज को दिया। Now, due to electrostatic induction, negative charges will be induced on the inner surface of the outer cell, as it is clear from the figure. तुम देख सकते हो, ये भी हम प्लस q कूलम का चार्ज ये जो अंदर का सेल है उस पर हम देते हैं, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जैसी घटना का अंजाम होता है। और उस घटना के चलते क्या होता है कि यह जो बाहरी सेल है, इस बाहरी सेल का जो अंदर वाला सतह है, यानी ये अंदर वाला सतह, इस पर नेगेटिव चार्जेस माइनस q कूलम ऑफ चार्ज इंड्यूस करेगा। और ठीक इसका जो बाहरी सतह है, इस बाहरी सतह पर प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये जो है इंड्यूस करेगा। और तुम देख सकते हो यहाँ पर ये फिगर से बिल्कुल ही क्लियर है। तो अब हम क्या करें भाई कि यह जो आउटर सेल है, इस आउटर सेल को अर्थली ग्राउंडेड कर दें। लेट अस नाउ ट्राई टू मेक अर्थ ग्राउंड this outer cell. See here. अब हमने क्या किया, ये जो बाहरी सेल है, तुम देख सकते हो, इस बाहरी सेल को अर्थ से ग्राउंडेड कर दिया। ये भी हमने अर्थ से ग्राउंड किया, तभी क्या होगा कि ये जो बाहरी सेल है और इस बाहरी सेल पर जितने पॉजिटिव चार्जेज इंड्यूस्ड हुए हैं, ये तमाम इंड्यूस्ड चार्जेज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी
अर्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आएंगे, पहुंचेंगे, और ये तमाम पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, जो कि आउटर सरफेस पर इंड्यूस हुए थे, इनको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, इनके प्रभाव को समाप्त कर देगा। और इस तरह से हमारे पास एक तो ये जो चार्ज दिया इनर सेल पर, और जो आउटर बाहरी जो सेल है उसका जो इनर सरफेस है उस पर जो चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, यही दोनों सरवाइव करेंगे। पहले एक चीज मैं बताऊं, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग बाउंड चार्ज कहते हैं। अब देखो, ये कर देने से ही ये जो व्यवस्था बना, इस व्यवस्था का नाम स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, या इसे हम लोग spherical condenser के नाम से जानते हैं। The arrangement which is formed by doing this activity, it is called spherical capacitor or it is called spherical condenser. So let us now try to calculate what will be the value of capacity. How will you calculate the value of capacity for such capacitor? So to calculate the value of capacity, let us imagine that there be a point P, and you can see here this is the point P, and this point P, it is located at a distance x from the center. Now it is clear that the charge supplied to the inner cell, it is plus Q, and this charge will behave somewhat like it is concentrated at the center O. जो भी चार्ज दिया हमने, वह चार्ज इस तरह से आचरण प्रदर्शित करता है मानो वो जो चार्ज हमने प्लस क्यू दिया है वह इस सेल के सेंटर ओ पर केंद्रित है। इट विल एक्ट एज द पॉइंट चार्ज, और यह स्थिति हो तो x दूरी पर ये जो हमने ऑब्जर्वेटरी पॉइंट लिया, इस पॉइंट P पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू the charge, it is q, and the distance is x square. It is very clear. स्पष्ट है कि इस पॉइंट पर जो भी हमने चार्ज दिया इनर सेल के चलते, इस पर जो फील्ड डेवलप करेगा उस फील्ड की मैग्नीट्यूड इतने के बराबर होगी। नाउ लेट अस प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द पॉइंट P. We are going to place a unit positive charge, a unit positive charge at the point P. यानी जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखें। जब ही इस पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, स्वाभाविक सी बात है, यह जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा इस फील्ड के चलते एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। I mean to say that if we place a unit positive charge at the point P, then that unit positive charge will experience a force due to the electric field given by this formula. So the force experienced by the unit positive charge, that must be equal to how much? Force is equal to charge multiplied by applied electric field. Since the charge has got the magnitude 1 and the field is capital E, so it will be equal to 1 into E, and it is quite obvious that the force will be equal to field, that is Q by 4 pi epsilon naught into x square. Very simple. Now this unit positive charge will experience a force of repulsion, and here there is migration of induced negative charges, and due to all these induced negative charges, this unit positive charge which is held at the point P will experience force, and under the influence of that force, that unit positive charge will tend to move away from the point P. अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट P पर रखेंगे, वह चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके चलते रिपल्सिव फोर्स अनुभव करेगा, और इस चार्ज के चलते उस पर अट्रैक्टिव फोर्स का कार्य करेगा। अर्थात एक फोर्स इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल कर रहा है, दूसरा फोर्स उसको उधर की तरफ खींच रहा है। स्वाभाविक सी बात है
यह यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट P से दूर जाएगा और ये जो आउटर स्फीयर है या सेल है उसके सतह की ओर पहुंचने की कोशिश करेगा। सो जस्ट इमेजिन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स थ्रू एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज बहुत ही थोड़ी सी दूरी, कल्पना करो, यहां तक आया और इस तरह से यह जो दूरी है dx है। वैसी स्थिति में elementary walk will be done and this elementary walk done can be given as dw, it is equal to f into dx। और इस तरह से यदि इसको हम निकालें तो ये आएगा q by 4 pi epsilon naught into x square into dx। इट इज क्लियर। अब कल्पना करो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर इस सतह के यहां से बाहरी सतह है वहां से चल करके और यहां तक पहुंचे तो वैसी स्थिति में ये जो टोटल वर्क डन होगा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जो टोटल वर्क डन होगा W इट इज इक्वल टू इंटीग्रल कहां से कहां तक भाई, क्योंकि इनर सेल का रेडियस a है, आउटर सेल का रेडियस b है और ये वर्क कितना हुआ एलिमेंट्री वर्क यहाँ पर हम लिख देंगे q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर और इंटू dx। अब इस फंक्शन को तुम इंटीग्रेट कर सकते हो और ये वैल्यू तुम्हारा आएगा कितना q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल, इसको कर दो a से लेकर so this relation will come q by 4 pi epsilon naught integral a to b and it will be dx by x square। So dx by x square can be written as x to the power minus 2 dx। You can see here। Now try to solve this relation। You will get q by 4 pi epsilon naught and this will be x to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 lower limit, it will be a upper limit, it will be b and further you can write this relation minus 2 plus 1 that you get minus 1। So let us take out of this bracket, so we'll write minus q by 4 pi epsilon naught and here you will write x to the power minus 2 plus 1 that you will get x to the power minus 1। So x to the power minus 1 can be written as 1 by x। See here, lower limit a, upper limit b and this will come minus q by 4 pi epsilon naught and 1 by b minus 1 by a, 1 by b minus 1 by a। This relation will also be equal to q by 4 pi epsilon naught into, you can see here, 1 by a minus 1 by b। Now this is the value of work done। So from the definition you know very well the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to other point, it is called potential difference। So it is clear that the potential difference between these two cells will be equal to the work done। So we can write here, see here, we can write the potential difference P that must be equal to the work done and this will be equal to how much, q by 4 pi epsilon naught into 1 by a minus 1 by b। It will also be equal to q by 4 pi epsilon naught into, let us take the LCM here, we will write AB, you get B minus A। Now try to calculate the value of capacity। What will be the value of capacity? See here, the capacity, it is given by C equals to
Q by V. C is equal to Q by V. Charge is Q and the potential difference, it is equal to V. So this value, it will come as C equals to Q by V. Now the charge given is Q, so we'll write Q divided by V, that is Q by 4 pi epsilon naught into B. So see here, Q will be cancelled out, and thus you can write this relation as 4 pi epsilon naught into AB divided by B minus A. So this is the required expression for capacity of a spherical capacitor. Thus a spherical capacitor C, it is given as 4 pi epsilon naught AB divided by B minus A. Okay, thanks.